सो एल्गोरिथम एनालिसिस ये प्रीवियस लैब में मैं डिस्कस करने वाला था, बट बार बार लॉग इन लॉग आउट की वजह से डिस्टरबेंस हुआ था, तो मैं ये छोड़ दिया था क्योंकि ये ज़रा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझने के लिए। थ्योरेटिकल डिस्कशन है एंड ऑब्वियस ऑफ कोर्स वी विल सी we will do analysis on our programs also, but before that we have to understand what is actually analysis, why we are doing analysis. Okay, to find the efficiency in the program, to select the best algorithm. Okay, the algorithm is will be good in the beginning of the class only. We have checked why we are applying the algorithms. Okay, which algorithm will be the best algorithm, why we are doing the data structure, to achieve the effectiveness and the efficiency. Okay, so this is the very important whenever we are dealing with the programs, or the implementation of the part. uh, so actually, if we talk about broad algorithm analysis, there are actually categorized into two types. The first one is priori analysis, and the second one is posterior analysis. Priori analysis में क्या होता है, हम मतलब ये एक रिसर्च ओरिएंटेड काम है, मतलब वी आर डिजाइनिंग द न्यू एल्गोरिथम. Okay, here we are designing the new algorithm in a simple word. Meanwhile, you just remember that the first point is the first the bullet symbol is the priority analysis is nothing but we are designing the algorithm. That means we are keeping more focus on theoretical discussion. We are not focusing on implementation part. Okay, so we are not focusing on the implementation part. I don't know you have the idea or not on the research oriented tasks. In the research oriented tasks, if you check any research paper on internet, suppose if you want to if you want to do your project based on the research papers, IEEE research papers, if you see and check the research papers, there are so many assumptions and to design the algorithm. They will take their own assumptions to design the algorithms. Why we are designing the algorithms? To solve the problem, obviously. Okay, so they first find the problem, what is the problem, and check whether this problem is solved or not. If this problem is already solved, that means, so they will try to find the loopholes या shortcomings हम इसको कह सकते हैं, limitations भी हम कह सकते हैं. अब वो लिमिटेशन को पूरा करने के लिए वो एल्गोरिथम को रीडिजाइन भी कर सकते हैं, या नहीं तो इनपुट्स को आउटपुट्स को चेंज कर सकते हैं, या नहीं जो भी जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वो चेंज कर, या टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं. तो वो पूरा प्रियोरी एनालिसिस में आता है. जो थ्योरेटिकल डिस्कशन रहेगा वो काफी उनको जो है वहां पर थ्योरेटिकल डिस्कशन में जो है ध्यान देना पड़ेगा. द सेकेंड वन that we are going to focus is the posterior analysis. Okay, so posterior analysis is our part that we are doing in our data structure. Okay, so data structure and algorithm is nothing but posterior analysis that we are doing here. We are not finding any new algorithm, we are not designing any new algorithm, we are only studying the existing algorithms. Like till now we studied uh, the linear search and the binary search. In future we are going to learn about the stack queue. Okay, what, how many types of queues are there, and what is sorting techniques, graphs. Okay, trees, different kind of binary search trees. कई सारे हम algorithms हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. तो जो हमारा पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है. तो algorithm analysis actually categorized by two types. अब अगर फर्स्ट में मैं एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट में मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम काम क्या कर रहे हैं. वो काम करने के बाद फिर उसको भी हम वैलिडेट करना जरूरी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो भी एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग को, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, एक हमारा लीनियर सर्च है, और या नहीं तो हम उसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, और दूसरा सर्च है बाइनरी सर्च. दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा आपको बेस्ट एल्गोरिथम लगेगा? तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि बाइनरी एल्गोरिथम बेस्ट. तो वी आर डूइंग द वैलिडेशन. Okay, so we are deciding the which is the best algorithm based on the time and the space. Okay,
अब आज के जमाने में स्पेस कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, बट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Time is very important in the present era. So this is our, the parameter which we are validating the algorithm which is the best one, so which comes under posterior. In the same way priori analysis में भी उसके अपने खुद के parameters होते हैं validate करने के लिए. ठीक है, वैलिडेट जैसे कि करेक्टनेस और एक्यूरेसी, कई सारे होते हैं उसमें. कितना एक्यूरेट है आपका अल्गोरिथम जो आपने डिजाइन किया है, क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबसे पहली बात. ठीक है, वो प्रियोरी में एनालिसिस में जो है डिसाइड होता है. सो दैट विल बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट अगेन विच कम्स अंडर रिसर्च ओरिएंटेड. Okay, so but we are discussing about the posterior analysis. If you read the text over there in the slide, this is an empirical analysis of an algorithm. यानी जो अल्गोरिथम है उसके ऊपर आप जो है बस जो एग्जिस्टिंग अल्गोरिथम है उसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो. ठीक है, द सेलेक्टेड algorithm is implemented using programming language. Whatever the algorithm you have selected, the existing algorithm you are implementing using one programming language, which is not a biggest challenge for us, because if you know the programming language and you know algorithm how it is working, then it is very simple. So knowing the algorithm and implementing that algorithm using a programming language, that is only enough, okay, for the data structure and algorithms in the posterior analysis. So this is then executed on target computer machine, whatever it may be the machine you are executing. Why I'm saying machine? Because the machine, the time, it depends on the machine also. ओके, मशीन के ऊपर भी टाइम डिपेंड करता है, बट हम वो उतने डिटेल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो नहीं, मतलब फाइंड नहीं कर रहे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कर रहे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इनपुट्स. Okay, the size of the inputs, the size of the program, we are calculating the time complexity based on the size of the program. So right now, because क्योंकि हम जब पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी पॉइंट आएगा, बट हम फ्यूचर में जो भी फॉलो करेंगे स्टेप्स, उसमें ये वाली चीज को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे. ये वाले पॉइंट को कहाँ पर है वो, दिस इज देन एग्जीक्यूट ऑन द डिफरेंट this computer machine we are going to ignore in future whenever the thing, but it depends. Okay, just give me if I no problem कर दिया phone. In this analysis actual statistics like running time and space required are collected. तो ये इसमें जो हम है टाइम एंड स्पेस, ये दोनों के हिसाब से जो है हम एनालिसिस करते हैं. ओके, so these are two important things that you have to remember in the future. Okay, meanwhile you just read this point. Hello, yes sir. Yes, sir. Yes, I have given sir. ये जो एरिया so whenever we are designing, whenever we are doing or selecting the algorithm, best algorithm to solve your particular problem, suppose if you are doing some searching technique, you are designing some search engine, or you are designing for the data repository for retrieving the reports, different kind of reports. So वहाँ पे भी searching बहुत important होता है. तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट. Does the program meet the original specification of the task or not?
these are some important points that you have to keep in mind. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आपका टास्क एक है और you are doing some different thing, कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हो जा रहा है. So these are the things that you have to remember at least. So we are considering these questions, we are raising these questions in a form of criteria upon which we can judge a program. Okay, so which will be the best program? Program सही है या नहीं है? Does the program meet the original specification of the task? Does it work correctly? Does the program contain documentation that shows how to use it and how it works? ये जो थर्ड पॉइंट है, आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन से मुराद आपका एल्गोरिथम आ जाएगा या आपका फ्लो चार्ट आ जाएगा. ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना बहुत जरूरी होगा. डॉक्यूमेंटेशन इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप कौन सा भी प्रोडक्ट खरीदिए, हर प्रोडक्ट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैनुअल. तो एज ए प्रोग्रामर आपका डॉक्यूमेंटेशन अलग रहेगा. ठीक है, सो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है. व्हाई वी आर चेकिंग डॉक्यूमेंटेशन? डज द प्रोग्राम कंटेन डॉक्यूमेंटेशन दैट शोज हाउ टू यूज इट एंड हाउ इट वर्क्स? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? To understand what actually doing in your program. Okay, some people they don't know. Okay, they don't know the language that you are using. So by using your documentation, by using your document, he or she can develop that the same logic in different programming language. Okay, it may be in Python, it may be in Java. Okay, it depends on. So documentation is very important point whenever we are dealing with the algorithms. Okay, implementation. Does the program effectively using the functions to create the logic units? Okay, लॉजिक्स सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे फंक्शंस के जरिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इज द प्रोग्राम कोड रीडेबल? ऐसा भी नहीं कि जो है पूरा मिक्सअप नहीं होना चाहिए, इधर का उधर कोड उधर का इधर पूरा वहाँ यहाँ जो है मिक्स नहीं होना चाहिए. सिस्टमेटिक होना चाहिए. जैसे कि प्रीवियसली हम प्रोग्राम्स पहले मेन मेथड में मेन फंक्शन में लिखते थे, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कैटेगरीज करें फंक्शंस में, उसके बाद फिर क्लासेस में हम उसको कैटेगराइज करें ताकि वो मोर रीडेबल फॉर्म में हो. आप चाहे तो क्लासेस भी बना सकते हो अगर आपका प्रोग्राम लेंथी हो जाए. ठीक है, स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हो. यानी एक रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए आपका प्रोग्राम. यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्लो मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल वे. डज द प्रोग्राम इफेक्टिवली यूजिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्टोरेज? ये डेटाबेस से रिलेटेड है. क्योंकि हम पूरा ओवरऑल पढ़ रहे हैं कि प्रोग्राम आप इन फ्यूचर की हम बात करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी अभी फिलहाल उतना हम नहीं देखेंगे, बट इन फ्यूचर you have to maintain the documentation. In the same way, are you storing the information in the primary or the secondary storage or not? Okay, so in the primary storage means primary storage तो temporary रहता है ना, वो तो RAM रहेगा. Okay, the primary storage will be the RAM. So यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं प्राइमरी स्टोरेज के. जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कुकीज भी हो सकते हैं, सेशंस भी हो सकते हैं. ठीक है, जो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है. जब आप लॉग आउट हो जाओगे तो यानी तो आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करोगे तो वो आपका मेमोरी स्पेस से चले जाएगा. आप चाहे तो फाइल हैंडलिंग के जरिए आप परमानेंटली फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो आपके अपने सेकेंडरी स्टोरेज में. ठीक है, सो इज द प्रोग्राम रनिंग टाइम एक्सेप्टेबल फॉर द टास्क? Again the time complexity here it comes, which will be having the more important. So the space and the time which will give the more impact on the algorithm to decide which will be the best algorithm to implement for the particular task or to accomplish a particular task. So these criteria focus on performance evaluation. Okay, which we can divide into two distinct fields. अब ये सारा जितने भी क्वेश्चंस आप रेस कर रहे हो ये हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए. बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस ओनली यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंजेस इन द फ्यूचर whenever you are designing the big system or the big the software. So ये आपको थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए. तो दो जो कैटेगरीज है वो दो कैटेगरी है. ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन इज द टाइम एंड द सेकेंड वन इज द स्पेस. ओके, स्पेस की बात फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, स्पेस इज नॉट द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस. द टाइम इज वेरी चैलेंज, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर
us to identify the best algorithm. Now suppose X is an algorithm and N is the size of an input. देखिए जनाब, without size we cannot do or we cannot find the time as well as space. Okay, so N plays the major role when we are, you know, whenever we are talking about the time and the space. Okay, so N plays the major role here. So N is the size of an input data, and the time and space used by the algorithm is X. Are the two main factors. The first one is the time factor and the second one is space factor. What is time factor? Time is measured by counting the number of key operations such as comparison in the sorting algorithm. यहाँ पर sorting algorithm का एक example लिया हूँ. सॉर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम कंपेयर करके सॉर्ट करते हैं ना, कंपेयर करते हैं उसके बाद स्वैप करते हैं, कि कंपेयर करते हैं उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो कितने मर्तबा आप कंपेयर कर रहे हो, कितने मर्तबा आप उसे सॉर्ट कर रहे हो, वो कितने मर्तबा कर रहे हो, वो काउंटिंग के ऊपर आपका टाइम डिपेंड करता है. आपका टाइम फैक्टर वो काउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही बार आप कर रहे हो और आपको रिजल्ट आ रहा है तो आपका जो टाइम रहेगा वो बेहतरीन रहेगा. ओके, दैट विल बी द बेस्ट टाइम. So that algorithm become the best algorithm for, you know, performing the sorting. Okay, performing the sorting. So it depends on the counting. कितने counting कर रहे हो आप, कितनी मर्तबा आपका statement execute हो रहा है. Now space is measured by counting the maximum memory space required by the algorithm. Simply कितने आप variables इस्तेमाल कर रहे हो, कितने functions इस्तेमाल कर रहे हो, ये पूरा जो है space के ऊपर depend करेगा. तो इसका भी हम फॉर्मूला देखेंगे. स्पेस क्या है, जो भी आप अल्गोरिथम यूज कर रहे हो प्लस और जितने आप कांस्टेंट यूज कर रहे हो, दोनों को जब आप मिलाओगे तो वो स्पेस बन जाएगा. So we will see that with the help of an example and we will identify the algorithm. So the complexity of an algorithm f of n, जो भी फंक्शन आप फाइंड कर रहे हो, gives the running time or the storage space required by the algorithm in n terms. Again I will say the n plays the major role. Maybe how many times it is counting. Okay, it will count the n number of times. N will be the one, n will be the n minus 1 or n will be the n plus 1. n plus 1 भी हो सकता है ना. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर सर्च कर रहे हो, अगर आपको डेटा नहीं मिला है तो वो n plus 1 रहेगा, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट हो जाता है. और अगर आपको एलिमेंट अगर मिल रहा है तो वो n हो सकता है. और उसमें बेस्ट जो सिचुएशन है, बेस्ट जो एल्गोरिथम है वो 1 रहेगा. अगर एक ही इटरेशन में आपको आपका एलिमेंट मिल जाएगा तो n की वैल्यू 1 रहेगी. तो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, n स्क्वायर भी हो सकती है, और एवरेज भी रहता है. एवरेज जो है हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर व्हेन वी आर डीलिंग विद द, यू नो, दिस साइज n. Okay, this will be the main point. Today we have only theoretical discussion, and tomorrow I will try to do, you know, some kind of you know, calculation, mathematical calculation, to find the time complexity and the space complexity. Space complexity का तो मैं आज ही बता दूंगा. Time complexity, क्योंकि time complexity tough है. It is very difficult to identify the time complexity. It depends on the number of iterations or the execution of the statements. Now we start from the space complexity first. What is space complexity? Already you know, space complexity means the space which is required to implement, the space required to implement the existing or a given algorithm. Okay, the space complexity of an algorithm, the space complexity of an algorithm represents the amount of memory space required by the algorithm in its life cycle. Life cycle means पूरा complete algorithm execution शुरू से लेके आखिरी तक, उसके लिए कितना मेमोरी स्पेस होना है, वो मेमोरी स्पेस को आइडेंटिफाई करता है, वो रिप्रेजेंट करता है. द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज इक्वल टू द सम ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स. टू कंपोनेंट्स है. सम बोले तो आपको पता है एडिशन करना है. ठीक है, तो एडिशन क्या करना है, एडिशन दिस पॉइंट प्लस this point. Okay, this point plus this point. So suppose our space complexity will be this s, then equal to the first one is this point plus, and the second point is this one.
So this is how we are identifying the space complexity, and we will see in the coming slides. Now meanwhile, you just you have to know what is the component. The first component is the fixed part. With the fixed part, that is a space required to store certain data and variable that are you know ये जो है independent है. प्रोसेस को चेंज कर लीजिए. दिस इज इंडिपेंडेंट. ओके, कुछ किया था मैं तो वो पूरा पीपीटी में रिफ्लेक्ट हो गया. स्पेलिंग बदल गई. Okay, this is just independent. That means you are talking about some constants. Obviously, you are talking about some constant. I can see, you can see here, these are the constants. Okay. For example, simple variables or the constants used in a program size. Uh, in the second part, we are discussing about the variable. Okay, the variable which are required to calculate the space. The variable part is the space required by the variable whose size depends on the size of the problem. For example, dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation. यहाँ पर आप जो वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू बदल भी सकती है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट यूजिंग द कांस्टेंट्स एंड वी आर चेकिंग द प्रोग्राम साइज. यहाँ पर ये फिक्स पार्ट है. थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर इसको फिक्स पार्ट समझ लीजिए और ये नंबर्स रहेंगे और ये जो है हमारे वेरिएबल्स रहेंगे. ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए ताकि वी विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्लाइड हियर. If I move to the next slide, you can see that how I am performing the operation. You can see here space complexity S of P, space complexity S of P of any algorithm P. So here P will be the algorithm. The algorithm may be for the searching. For if you are searching an element, it may be sequential search, it may be a binary search. So it depends on the algorithm. So S is S of P. So space complexity S of P of any algorithm P is S of P is equal to C plus S of P, S of P of I. Now what is C here? C is the first part, that will be the fixed part. You consider it as a constant. If you want to add this plus after sp of I, you can add it. Sp of I plus C भी लिख सकते हो या C plus sp of I. दो तरीके से आप लिख सकते हो. Now what is the second part? The second part will be it depends on the size of an array. Okay, it depends on size. Now for indicating the size, we are using the I symbol here. As you can see, we are indicating the size. Just removing this one. Here you can see the size I. Now what is I? I will be the number, I will be the size, I will be the value. So sometimes we are considering this I to n. Okay, the size of how many times it is going to be executed, or how many iterations are going to be happened, how many it is going to be multiplied, how many times it is going to be multiplied. It depends on the I. क्योंकि हर एक का इनपुट अलग अलग होता है ना, जरूरी नहीं है इनपुट सेम होना है. हर एक का इनपुट अलग अलग होता है, हर एक का डेटा टाइप अलग होता है. ठीक है. सो द फॉर्मूला टू फाइंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज sp is equal to c plus sp of I, where c is the fixed part and s of I is the variable part of the algorithm, which depends on instance characteristics. Instance characteristic will be the size. Okay, it may be the number, it may be the size, it may be the value. So that is I. Okay, so I indicates n, or the size or the value, whatever it may be. Now you consider the following example here. Following is a simple example that tries to explain the concept. Now ये algorithm है हमारा, ये हम एक फंक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं. ठीक है, स्टेप्स लिख रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3.
ठीक है, ये किस टाइप का आप कह सकते हो, ये इट्स अ काइंड ऑफ सूडो कोड, आप इसको सूडो कोड कह सकते हो. ओके, it is a combination of simple language and the operations and the functions. This is called a pseudocode. Pseudocode में भी आप चाहे तो स्टेप वन स्टेप टू लिख सकते हो, कितने लाइन से, या तो लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर, या स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, आप चाहे तो लिख सकते हो. बट दिस इज द सूडो कोड. सूडो कोड दिखने में बहुत छोटा दिखता है, बट अगर आप डायरेक्टली ये कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो वो काम नहीं करेगा, because we are not following the exact programming syntax in a pseudocode, but it's look like program, the combination of program and a natural language, like start and stop is a natural language and this will be the programming language. Okay, this line and this line will be the programming language and this is the natural language. Now if you consider the above one, here we have three variables, that is a, b, c. Here as you can see, a, b and c, and 10 will be the constant. So how many variables we have? 3. A, B and C plus, so that will be the variables that we are trying to find. Okay, this is how we have calculated SP of I. So SP indicates, P indicates any algorithm. Okay, P three maybe, variables. yeah, plus 1. Now 1 will be the constant. Plus is a constant. Okay. So there is only one constant plus 3 variables. So in this way we are going to find out, is it a exact that what you are trying to find the space? No, it depends. Now space depends on data types of given variables and constant types, and it will multiply accordingly. अब वो हिसाब से जो भी आपका डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से जो है वो डिपेंड करेगा. ठीक है, कि वो कितना उसका साइज होना चाहिए और कितना वो होना चाहिए. Now if we move to the next slide, now here we are going to find the time complexity. So before finding the time complexity, you have to we have to take lot of examples to discuss the time complexity. So meanwhile you just read the blue color text which is present in front of you, that the time complexity is the number of operations, okay, an algorithm performed to complete its task with respect to input size. Okay, considering that each operation takes the same amount of time. For example, आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जिसमें c is equal to a plus b कर रहे हो, this is called a operation. अब वो सेम ऑपरेशन कितनी मर्तबा टाइम मतलब कितनी मर्तबा वो परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज हाउ वी आर डूइंग हियर. एज यू कैन सी हियर वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग. ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, कंसिडरिंग दैट ईच ऑपरेशन टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. सेम अमाउंट ऑफ टाइम कब लेगा वो, सेम अमाउंट ऑफ टाइम जब लेगा जब वो एक ही किस्म का ऑपरेशन हो, एक ही किस्म का ऑपरेशन हो. अगर ऑपरेशन बदल गया या वैल्यू भी बदल गई तो टाइम भी बदल जाएगा. ओके, अगर वैल्यू बदल रही है तो टाइम भी बदल जाएगा, अगर ऑपरेशन बदल रहा है तो टाइम भी बदल जाएगा. तो आपको फिर आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो फाइंड करने में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाएगी. ओके, तो उसके कई सारे हैं, इतनी आसानी से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड नहीं कर सकते हो, बट इसके शॉर्टकट्स भी है. सबसे पहले हम, अगर मैं कोई प्रोग्राम दे रहा हूँ आपको, मैं कहूंगा कि भाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप फाइंड करिए, तो यू हैव टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर देयर बाय यूजिंग द डिफरेंट सिचुएशंस. Okay, now the algorithm that perform the task in a smallest number of operation is considered the most effective one. Smallest time यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो, ठीक है, वो एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक और आपको वो एलिमेंट मिल जा रहा है फर्स्ट पोजीशन पे. So the best time complexity will be order of 1. Order of 1. Because you are finding, you are getting that element into the first location itself. That will be the best complexity. The time requirement can be denoted or defined as a numerical function, that is t of n, where n will be the size of the or the number of steps or the number of statements to be executed. Okay, where t of n can be measured as number of steps provided each step takes the constant time. Okay,
So this will be function, in this function we are going to write like how we are writing here. P of n is equal to c into n, where c is the constant, n is the number of steps. Okay, n will be the number of steps. For example, in case of addition of two bits integer, n steps are taken. N steps are taken. Consequently, the total computational time will be c into n. So c will be, you know, the constant value into n. How many times you are performing? Okay, how many times you are performing, that into the c, the time consumed. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बार वो परफॉर्म कर रहे हो तो एक एक बार जो है आपको टाइम वो वहां पर आएगा. ठीक है, दैट c is the time consumed for the addition of 2 bits. c टाइम आएगा. अगर आप दो बार करोगे तो c इंटू टू आएगा, तीन बार करोगे c इंटू थ्री आएगा, चार बार करोगे c इंटू चार आएगा, पांच बार करोगे अप टू n. So if you are performing up to n, that means the time complexity will be c into n. Okay, c into n. सर बट ऐसे में तो हर बार नंबर सेम रखना पड़ेगा ना? हाँ, नंबर सेम रखना पड़ेगा, बट यहाँ फिर ये तो आइडियल कंडीशन हो गया ना फिर, मतलब सी, हाँ वो उसके लिए ठीक है. अभी इसमें नंबर सेम रखने की भी बात है और ये डिपेंड करेगा आपके प्रोसेसर स्पीड के ऊपर. तो बट यहाँ पर हम कई सारे चीजें इग्नोर कर लेते हुए जाएंगे. हम मैक्सिमम जो हेवी वाला है, जहां पर ज्यादा वक्त ले रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो होता है लूपिंग, नंबर ऑफ इटरेशन और द रिकर्शन. वो चीज को हम ज्यादा मद्देनजर रखते हुए और जो छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हैं हम उसको इग्नोर कर लेते हुए जाएंगे. ओके, तो ये तो आइडियल हो गया सिचुएशन, बट आइडियल नहीं रहेगा ना हमेशा. आपका तो वैल्यू चेंज होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप काउंट परफॉर्म कर रहे हो, काउंट की वैल्यू चेंज होगी और आपका ऑपरेशन भी बदल जाएगा. ओके, ये तो मैं सिंपल एक एग्जांपल लिया. वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन. Okay, we are talking about addition. If I talk about search, that will be different, completely different. If I talk about sort, that will be again completely different. Fine. Okay. yes sir. So here we observe that T of n grows linearly as your input size increases. So here n indicates that how many times you are executing that particular operation. How many times you are executing that particular operation. For example, if you are doing swapping, right, how many times you are performing swapping until you find the sorted array. Okay, until you find the sorted array, you are shifting the elements. Suppose you are shifting the elements to the right side of an array. How many times you are shifting until you got the position where you want to insert the particular element. Okay, you are shifting, suppose one more example, you are shifting the elements from the left side of the array. How many times you are shifting the elements for the left side of the array until your deleted element space will be filled with the new element. Okay, so it depends on different operations and how many times you are performing that operation, we are going to find the time complexity. हम example programs भी लेंगे